All right, so I'm back live again today, but today we will be not learning any story or any poem. Today, as you can see the thumbnail itself, today we will discuss mainly on voice change, and it is going to be a very short video, not a very long video, because from the thumbnail itself and from the title itself, you may have assumed that the video will be on voice change, and I'm going to make a very easy explanation today. मैं बहुत easily आपको explain करने वाला हूँ, so that in few minutes you can grasp the basic of voice change. So today we will be learning active and passive voice. All right, active and passive voice. तो आज हम लोग जो basically है, today we will learn the basics. आज हम लोग basics सीखेंगे. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनको बेसिक्स नहीं पता, दे डू नॉट नो द बेसिक्स. सी ओनली सॉल्विंग एक्सरसाइजेस विल नॉट वर्क. सिर्फ अगर आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तो वो आपका काम नहीं देगा कुछ. ठीक है, अगर आप बेसिक्स जानते हैं, इफ यू नो द बेसिक्स, ओके, द रूट, इफ यू नो द रूट्स, देन इट बिकम्स इजी फॉर यू टू लर्न. बहुत इजी हो जाता है लर्न करना. तो आज हम लोग जो है बेसिक्स हम लोग देखेंगे. तो विदाउट मच अडू, विदाउट एनी डिले, लेट अस स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो मैं बेसिक्स कुछ चीजें आप लोगों को आज बताऊंगा. आई हैव अ वेरी इलाबोरेट वीडियो. यू कैन चेक माय प्लेलिस्ट ऑन ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन. ठीक है, आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन फॉर क्लासेस 9 एंड 10. हालांकि इवन क्लासेस 11 12, इफ यू आल्सो हैव वॉइस चेंज इन योर सिलेबस, रिकॉर्डेड स्पीच वॉइस चेंज इन योर सिलेबस, यू कैन चेक दैट आल्सो. But regarding active and passive voice, you can check the playlist on grammar and composition. तब अगर आप grammar and composition के playlist में जाए तो वहां पे आपको मिल जाएगा मेरा बहुत elaborately explain किया हुआ वीडियो. ठीक है, बहुत elaborately मैंने उसको explain किया है. आप पार्ट बाय पार्ट, ओके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके अगर आप जाए तो आप वहां पे देख सकते हैं. बहुत सारे पार्ट्स में वीडियो डिवाइडेड है ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ठीक है, बट हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द बेसिक्स. ठीक है, वहां से आप इलाबोरेटली बहुत कुछ सीख सकते हैं. यू कैन लर्न मेनी थिंग्स वेरी इलाबोरेटली, ओके, इन अ डिटेल्ड मैनर फ्रॉम देयर. हियर आई एम गोइंग टू टीच यू द बेसिक्स. ठीक है, अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या है, लेट मी राइट डाउन द टाइटल, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो सबसे पहला चीज जो हम लोग सीखेंगे, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माय हैंडराइटिंग वेरी नाइसली. तो सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस ये आखिर है क्या, व्हाट इज एक्चुअली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस का जो है डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार. ओके, लेट अस लर्न द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस फर्स्ट. तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, active voice वो होता है, active voice is that where subject is important. I will explain you in detail again. Everything will be explained in detail today. Do not worry. I'm talking of detail in the sense I'm talking about the basics. तो basics हम लोग बहुत ज्यादा details में हम लोग study करेंगे. तो subject is important. Active voice में क्या important है, आप इतना याद रखें. Just remember one thing, that subject is important in active voice. All right. Now passive voice. Passive voice क्या है, in passive voice object is important. क्या है, object is important. ठीक है, तो passive voice में क्या important है, object. In active voice subject is important, and in passive voice what is important, object is important. Just remember these two things, active voice subject, passive voice object. Okay, fine, you can note down these things also if you would like to. Gary Limbu, hello Gary Limbu. All right, now what is subject and object. Okay, what is subject and object. I would like all my students to either take a screenshot or write this down, because I am going to come back to it again. मैं इस पे फिर से वापस आऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको लिख ले. प्लीज राइट दिस डाउन, बिकॉज आई विल कम बैक टू इट. ओके, नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट.
अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज ऑलवेज नोन एज द एक्शन डूअर. सब्जेक्ट इज ऑलवेज नोन एज द एक्शन डूअर or one who does the action. जो कोई भी एक्शन करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं. ओके, तो सब्जेक्ट मीन्स एक्शन डूअर, वन हु डज द एक्शन. जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट है. ओके, एनीबडी हु इज डूइंग द एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट? What is object? Object is on what action is done. I am explaining in very simple and easy language so that all of you can understand. I don't want to use any bombastic English. मैं कोई ऐसा भारी भरकम इंग्लिश यूज नहीं करना चाहता. जो इंग्लिश आपको समझ में आए मैं वही इंग्लिश यूज करूंगा. तो on whom the action is done. किस पे एक्शन हो रहा है? On whom action is done. On whom action is done. जिस पे एक्शन हो रहा है. यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का दूसरा वर्ड, द अदर वर्ड फॉर ऑब्जेक्ट इज टारगेट. कि सब्जेक्ट का टारगेट क्या है? व्हाट इज द टारगेट ऑफ द सब्जेक्ट? द टारगेट इज ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट का टारगेट किस पे है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, ऑन व्हाट एवर एक्शन इज डन दैट बिकम्स द ऑब्जेक्ट और टारगेट. लाइक यू आर थ्रोइंग अ स्टोन एट द ट्री. से फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव एन example, the man kicked at the, or the man kicked the ball. The man kicked the ball. All right, now here if you see, here who is doing the action of kicking the ball? The man is doing the action of kicking the ball. So the man is the action doer. That means the man is the subject. Now what is the target of this man? On whom is the action being done? The action of kicking. So kicked becomes the action word, right? Kicked here is the action being done by the man, right? तो ये जो man है ये subject है क्योंकि ये action कर रहा है. Kicking का action ये आदमी कर रहा है और kick हो गया आपका action. लेकिन किस पे एक्शन हो रहा है? On what is this action done? What is the target of this man? The target of this man, the object of this man is the ball. तो आपका जो है बॉल हो गया ऑब्जेक्ट. तो एक्शन किस पे हो रहा है? बॉल पे हो रहा है. कौन एक्शन कर रहा है? Who is doing the action? The man is doing the action. So the man is the subject. On what is the action done? किस पे एक्शन हो रहा है? The ball पे एक्शन हो रहा है. The action is done on the ball. So the ball becomes the object. Now what is the action? The action is of kicking. है ना? तो kicking का एक्शन हो रहा है, right? So kick becomes the action. और हम लोग जानते हैं कि any action word, जो word हमें एक्शन समझाता है, any word that explains us or shows action is called a. आप लोगों ने बचपन में सीखा है. You have learned this in your class 5, class 6, class 7, class 8 also, that any action word is called word, any action word is called a verb. So kick becomes your verb. That means we have subject, we have a verb, we also have an object. ठीक है, अब हम लोग आते हैं. Now let us go back to the section where I have explained you active meaning of active voice and meaning of passive voice. तो एक्टिव वॉइस में क्या इंपॉर्टेंट होता है? आई टोल्ड यू, इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट. इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट? इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स द एक्शन डूअर, दैट मीन्स द मैन इज इंपॉर्टेंट. इन पैसिव वॉइस व्हाट इज इंपॉर्टेंट? ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स द बॉल इज इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन आई से इंपॉर्टेंट? When I say in active voice subject is important, what do you mean by this term important? Important means, if I give a simple example, say in a classroom, this is a very common thing that all of you may have noticed or definitely you have noticed, is that in a classroom, if you take your class or any other class, generally you will see the
most intelligent students who stand first in the class, or any girl or any boy who stands first in the class, will always sit in the first bench. Correct? Or any important person, if you see, will always take his seat in the first row only. वो हमेशा आगे बैठेगा. Any important person will always stand first. जो भी कोई important आदमी होता है वो सबसे पहले आता है ना. Less important people will stand behind. जो कम important लोग हैं वो पीछे खड़े होते हैं और जो ज्यादा important लोग हैं वो सामने खड़े होते हैं. तो when I say subject is important, इसका मतलब क्या कि active voice में subject हमेशा आगे रहता है. In this example, if you see, the man is the subject and the man, I have written the man here only in the beginning itself, right? इसका मतलब ये sentence कौन से voice में हुआ? This sentence is in which voice? Because subject has been placed in the, I have mentioned subject in the beginning only. मैंने पहले ही subject को यहाँ पे mention कर दिया है. And because subject has been mentioned in the beginning, that means subject is important here. So if subject is important here, that means this sentence is in which voice? This sentence is in active voice. Right? This sentence is in active voice. ये sentence आपका active voice में हो गया, है ना? And what will happen in passive voice? In passive voice, in place of subject, there will be object. इस subject की जगह क्या आएगा? इस subject की जगह हम लोग object को जब put करेंगे तब वो sentence passive voice में हो जाएगा. ठीक है? जैसे कि say for example, if I write here, another example, if I write here, and just okay. Now I said in passive voice, object is important. अब कैसे object is important? Say if I say the deer was killed by the lion. Okay. अब हम लोगों ने क्या देखा? We have seen that in active voice, subject is mentioned in the beginning. So similarly in passive voice, object will be mentioned in the beginning. Now how will you identify the case? How will you identify which sentence is in active voice and which sentence is in passive voice? One way of identifying is from this word by. एक way of identification है from this word by by. If you find the word by, this is one way I am telling. This is not the only way. ये सिर्फ एक तरीका है. ये ऐसा नहीं है कि in every sentence there will be by. No, there are certain rules and regulations. Okay, but generally if you see the word by and after the word by, the word that you see here becomes the subject. ये आपका subject है by the lion. ठीक है? तो जब आप by देखेंगे उसके बाद वाला जो noun होगा आपका, it has to be a noun or a pronoun. Let me tell you, okay? It has to be a noun or a pronoun. इस पे मैं आऊंगा, I'll come to this. That will be the subject. So subject here is mentioned in the end. Subject को end में mention किया गया है. अब subject को end में mention किया गया है, तो object कहाँ है? Now the question comes, who killed the deer? The deer was killed by the lion. तो deer को किसने मारा? तो action कौन कर रहा है? Is the deer doing the action? What do you feel? Is the deer doing the action? No, the action is not done by the deer. तो action किया किसने? Action has been done. Who did the action? Action has been done by the lion. That is why the lion becomes the subject. Lion is the action doer. तो lion यहाँ पे action doer है, वो action कर रहा है. He is doing the, it is doing the action. On whom the action is done? The action has been done on the deer. That is why the deer becomes the target of the lion, the object of the lion. Right? The deer becomes the object or the target of the lion. ठीक है? That is why in passive voice, object is important. So we have mentioned object in the beginning here.
नाउ व्हाट इज द एक्शन बीइंग डन, वो एक्शन वर्ड कौन सा है? इफ यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द सेंटेंस यू कैन गेस, आई विल गिव यू 5 seconds pause, you can guess, okay, and mention it in the comment box also. Which is the action word here? The action word here is obviously killed. This is the action word. Now what is the other name, or what is also called, what is this action word also called in the language of grammar? It is called verb. So this killed becomes the verb. So we have object, we have verb, we have subject. In the similar manner, in action verb also, in active voice also, we have seen subject, verb, object. So you can put this formula in this way. You can put this formula in this way. Active voice, the sequence is what? Subject plus verb plus object, where subject is mentioned in the beginning and object is placed in the end. And what happens in a passive voice? These things becomes reverse, ulta. Okay, here in passive voice you will find object in the beginning, then it is added with verb. Verb will remain in the middle only, verb हमेशा middle में ही रहेगा, उसके बाद आएगा subject, right? So you remember the sequence. In active voice, SVO, subject, verb, object. In passive voice, it is OVS, object, verb, subject. Okay, did you understand this particular thing? So remember the sequence here, active and passive voice. Okay, now let us see some examples in short. Okay, so you have to remember this SVO and OVS. Active voice SVO, passive voice OVS. Just remember the sequence. Okay, now let us sort out some examples. कुछ examples हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, आइए. Alright, now I'll just show you the basics only. Okay, try to understand the basics. Now you must have very good knowledge of tense. Before you solve active and passive voice, you must have good knowledge in tense and forms of verb. ठीक है, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है. एग्जाम्पल्स से पहले, बिफोर सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स और बिफोर गिविंग यू एग्जाम्पल्स, लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर. कुछ चीजों का आप लोगों को ध्यान में रखना है, कुछ चीजों का आप लोगों को ध्यान में रखना है. तो क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे कि हम लोग जो है दो तरीके के एक्सरसाइज होता है. देयर आर टू kinds of exercises given in your exam. One exercise is active to passive. Okay, this is one, and another is passive to active. Passive to active. Today we will do from active to passive only. Let me just show you few examples from active to passive. In the next class I'll show you from passive to active. So active to passive and passive to active, there are two kinds of exercises that is given in the exam, and you must know both. There are some general rules when we solve from active to passive. So क्योंकि we are going to solve exercise from active to passive today, I'm going to give you a very brief and general idea today about active and passive voice. So let us try to see first. Okay, so we will learn some general rules, and these rules are from active to passive, not passive to active. Passive to active will have a different set of rules. उनके अलग अलग रूल्स होंगे. यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव के हम लोग थोड़े से रूल्स हम लोग स्टडी कर लेते हैं. आइए देखते हैं कि क्या होता है एक्टिव टू पैसिव में. तो सबसे पहला रूल क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट रूल? हम लोगों ने क्या देखा है कि एक्टिव टू पैसिव, इसका मतलब क्वेश्चन विल बी इन द एक्टिव वॉइस and your answer has to be in the passive voice. That means the question that will be given will be in the active voice, your answer will be in the passive voice. Now in passive voice, what is important? I told you, in the passive voice object is important, so you have to mention object in the beginning, right? So the first thing is that object will be mentioned
इन द बिगिनिंग से। ऑब्जेक्ट को आप सबसे बिगिनिंग में मेंशन करेंगे because your answer will be in passive voice. अब when you mention object in the beginning, subject will go where? You will interchange object with subject. Object will go in the place of subject and subject will go in the place of object. इसका मतलब if you, this means what? If you place object in the beginning, that means subject will go in the end. So subject will be, I'm just writing in short, subject will be mentioned in the end. तो subject को आप end में mention करेंगे, मतलब दोनों का जगह आप अदल बदल करेंगे सिर्फ. You will just interchange their places. Don't do anything else. Just remember this thing. There are more things to come. There are more rules, but just remember this thing that you will only interchange subject and object. Because you are solving, क्योंकि आप passive voice में solve कर रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट आपका बिगिनिंग में आएगा और सब्जेक्ट आपका एंड में चला जाएगा, तो दोनों का जगह जो है वो अदल बदल हो जाएगा. राइट, देन व्हाट विल यू डू? रिमेंबर वन थिंग कि हर एक्टिव टू पैसिव वॉइस में, इसका मतलब योर आंसर विल बी इन पैसिव वॉइस. आई एम राइटिंग हियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. योर आंसर विल बी इन पैसिव वॉइस. योर आंसर विल बी इन पैसिव वॉइस बिकॉज क्वेश्चन विल बी इन एक्टिव वॉइस. है ना, आपका क्वेश्चन जो है वो तो एक्टिव वॉइस में होगा और आपको आंसर चेंज करना है पैसिव वॉइस में. तो ये पूरा रूल जो है ये पैसिव वॉइस के लिए है. ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट थिंग इज दैट वर्ब विल बी इन द थर्ड फॉर्म. वर्ब विल बी इन द थर्ड फॉर्म. अब थर्ड फॉर्म वर्ब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देके आपको बोलता हूं. थर्ड फॉर्म वर्ब क्या होता है. जैसे डू, ये होता है फर्स्ट फॉर्म. तो सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, डिड हो गया. तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो गया, डन हो गया. दैट मीन्स इन द पैसिव वॉइस यू विल मेंशन ओनली द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नॉट द फर्स्ट, नॉट द सेकेंड. Mo Indrajit coach, good evening. BG expert, hello, how are you? ठीक है. Another example, if I give first form of the verb, I am giving go. What will be the second form of the verb? It will be went. What will be the third form of the verb? It will be gone. So which one will you take for passive voice? You will take the third form only. You will take the third form only. Alright, if you search Google, you will find a lot of verb forms. From the image section, you can download plenty of images. Okay, you have grammar books also with you. Today you don't need technology is there at the peak. है ना, टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर है आज, तो आप बिना बुक खरीदे भी आप इंटरनेट से ये सब चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो यू विल ऑलवेज टेक द थर्ड फॉर्म. ओके, so out of do, did, done, you will take done, the third form. Out of go, went, gone, you will take gone, the third form. So verb will always be in the third form. Then what you have to do is that you have to put a by before. Let me put it in this way. Add by before the subject. Add by before the subject. So when you mention subject, just before the subject you put the word by by. The example that I showed you just now, right? The deer was killed by the lion. So the lion was the subject. So you have to put a by before the subject. Okay, by the lion, by subject. So by plus subject. So you can write here, and if I write like that, by plus subject. Okay, before the subject you have to put by. Now sometimes what happens, there are few more prepositions that sometimes may be added in place of by. कभी कभी by नहीं भी लग सकता है. By may not be applicable in few sentences. There you may put some other prepositions also. Now by is a preposition, but there are some other prepositions that you may put there. Now you can add some other prepositions also. I'm writing in short. Okay, some other prepositions. Okay, I'm writing in full only. Some other prepositions. Add some other prepositions like in, at,
with, okay, and on. So these are some other prepositions that you may also put. Okay. Right. Sir, please email. Email writing I have explained, Mo Indrajit coach. I have explained email writing. You can go to my grammar and composition section. Okay. Or simply write email writing by Omni Gyan. You can just type on YouTube, go to YouTube and type email writing by Omni Gyan. I have explained in detail the format also and how to write email, that also I have explained. But definitely I will be coming up with another video on email writing also. Okay, since you have asked me to. So I'll come up with another video on email writing, don't worry. Okay. So here you see that these are some of the general rules from active to passive voice. ठीक है, समझ में आ गया आप सब लोगों को? You can take a screenshot or maybe you can write it down later also. This video will be here only. Okay, Indrajit. Okay. You can check. Okay. Now let us see some rules. Okay, if you have taken a screenshot or if you have written, or maybe after the live video ends, you can write also, no problem. Let me just show you some few examples. Just a few examples. Okay, later on I'll come up with more examples also, don't worry. Okay, so examples take place. Say the man, I showed you the first example, right? The man kicked, here I'll change the verb, the man kicks the ball. So who is the subject here? Who is doing the action here? The man is doing the action. Now when you are solving exercises at home, when you are practicing exercises at home, do one thing. Always do one thing. Always take a pencil. When you write down the question with pen, take your pencil and underline and write down which is the subject, which is the object, which is the verb. SPO, OVS, you write that down. So who is doing? First of all, look at the sentence and tell me who is doing the action. Obviously, the action of kicking is done by the man. So the man becomes the subject. You can write like that. Who is doing the, on what is the action done, or on whom is the action done? The action is done on what? The man kicks the ball. So उसका target क्या है? इस इंसान के, इस man का target क्या है? Target है ball. So you have to take the article the also, the ball. Okay, that means a particular ball is being talked about. एक particular ball के बारे में बात किया जा रहा है. तो हमेशा याद रखिए, you have to take the determiner or you have to take the article also. The एक article है. तो ball हो गया उसका object, उसका target. अब action क्या है? कौन सा वर्ड है जो हमें एक्शन समझा रहा है? Which word is explaining as action? It is the word kicks. So this becomes the verb. That means this sentence is in active voice, as I told you, because there is no by here. है ना? ये sentence active voice में है क्योंकि यहाँ कहीं by नहीं है. So this sentence is in active voice. Now in which voice you have to change? You have changed the sentence into passive voice. Now before I solve the exercise, few things you must remember in your mind. First thing, point number 1, identify SVO. सबसे पहले आपको SVO आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट. सबसे पहले आप वो आइडेंटिफाई कर लीजिए by underlining like that with pencil when you are solving exercises at home. But please do not do this in the exam. जब आप एग्जाम लिखने जाए तो यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर. कुछ भी आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर मत नहीं लिखेंगे, इतना याद रखिए. अदरवाइज यू हैव द चांस ऑफ बीइंग एक्सपेल्ड और योर क्वेश्चन पेपर विल बी चेंज्ड, योर आंसर स्क्रिप्ट विल बी चेंज्ड एंड अ न्यू क्वेश्चन पेपर एंड आंसर स्क्रिप्ट विल बी सप्लाइड टू यू, because there is a chance that if you write any answer on the question paper, there is a chance that वो क्वेश्चन पेपर आप अपने पीछे वाले दोस्त के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हो उसमें आंसर्स लिख के. तो इसीलिए अलाउड नहीं है. इट इज नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर. ओनली वन थिंग इज अलाउड. व्हाट इज अलाउड इज दैट when you have finished one question, you can just put a tick mark that
आई हैव फिनिश्ड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैंने आंसर किया है, तो दैट यू कैन टिक मार्क। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा आप अलाउड नहीं है कि आप कुछ भी लिखें। तो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सेकेंड थिंग, यू हैव टू आइडेंटिफाई, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, that you must learn tense। तो you will have to identify कि ये sentence कौन से tense में है, in which tense is this sentence, ये sentence कौन से tense में है, ये आपको identify करना है। फिर आप क्या करेंगे, finally आप जो general rules है, the general rules that I have shown you, you will apply the rules now here, one by one you will apply the rules। So these three steps if you follow, you will never make mistake in solving the exercises, whether it is exam or at home, you will never make mistake। आप कभी भी mistake नहीं करेंगे अगर आप इस तरीके से इस स्टेप फॉलो करके अगर आप एग्जाम्पल घर पे सॉल्व करते हैं, तो आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने स्टेप 1 कंप्लीट किया, वी हैव आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप है कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा टेंस। तो आप टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे टेंस? टेंस कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द वर्ब। तो आप वर्ब देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस कौन से टेंस में है। वी नो दैट हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, देयर आर 3 मेन टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, past tense and future tense। Each tense I have explained elaborately on tense also. Again, if you go to my grammar and composition playlist, you will find I have explained tense also in a very easy manner। फिर भी I am giving an overview here still, okay, I am giving an overview here। मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करके देता हूँ। तो 3 टेंस होता है हम लोगों का, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। So we have 3 tenses। Now each of the tenses are again divided into 4 subkinds। 4 subkinds में ये tense divide किया गया है। कौन कौन सा? Indefinite या simple, continuous, perfect, and the last one is perfect continuous। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया? ओके, इस चीजों को आप लिख भी सकते हैं। I would suggest you not to write because I have explained this elaborately on my grammar and you'll find it in my grammar and composition playlist। आपको वहां से मिल जाएगा ये। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। This knowledge you must have, otherwise it will be difficult for you and you will mess up with everything। आप सब कुछ जो है गड़बड़ कर देंगे। तो ये थोड़ा टेंस, आप टेंस के बारे में आप थोड़ा नॉलेज ले लीजिए। यू विल फाइंड इट इन माय चैनल इटसेल्फ। आप मेरे चैनल से ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का जो प्लेलिस्ट है, प्लीज चेक माय प्लेलिस्ट एवरी टाइम यू विजिट। आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पे सारे ग्रामर के एक्सप्लेनेशंस, वहां पे बेसिक एक्सप्लेनेशंस वहां पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। आई हैव ऑलरेडी पुट ऑल द बेसिक एक्सप्लेनेशंस देयर, टेंस, वॉइस चेंज, रिपोर्टेड स्पीच, यू विल फाइंड देयर। ओके, तो वहां से आप देख लीजिए। एनीवेज, now you see why you have to identify the tenses, because there are certain rules that you have to apply here। तो मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इलाबोरेट तो you will find it in my playlist only। Here I am explaining you very simply। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ये सेंटेंस सॉल्व होगा आपके पैसिव वॉइस में। दिस सेंटेंस विल बी इन पैसिव वॉइस, दिस सेंटेंस विल बी इन पैसिव वॉइस, है ना। तो इन पैसिव वॉइस व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको क्या लगाना है पैसिव वॉइस में, क्या इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। So what is the object here? It is just like maths. You'll see and put. What is the object here? The object is the ball. So you put the ball in the beginning. Okay, आपको सबसे पहले यहाँ पे the ball mention करना है। अब स्टेप नंबर 2 पे देखिए, आइडेंटिफाइंग टेंस। अगर आपने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया तो आप देखेंगे KICKS, किक्स। इट इज नॉट किक्ड, ED, ED यहाँ पे नहीं है।
right? Ed is not here. That means this particular verb is in which tense? It is in simple present tense. तो we know that in simple present tense आपको तीन चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा. In simple present tense you will find three things. You have to put three things here. Is, या तो are, या तो am. Any of the one you have to put, either is or are or am. Now you know another thing. Is you have to use for one, are you have to use for many, and am can be used only with I and with nothing else. am सिर्फ I के साथ ही लगता है और किसी के साथ नहीं. is मतलब अगर आप किसी एक के बारे में मेंशन कर रहे हैं, if you are mentioning about one thing, that is singular. If you want to mention, if the object is many, अगर object many है तो उसमें are लगेगा. अगर object, I am repeating once again, if the object is one, then you have to put is. I am talking about simple present tense. Once you have identified the tense, you have to put accordingly. If it is in simple present tense, then you will put is. If it is in singular, it will be is. If it is many, then it will be are. It matlab ball. I am talking about object. The object here is ball. And am will be used only with I. Now there is no scene of am here, so this am is automatically cancelled. Now how many balls are we having? Are we having one ball or many balls? You do not have s here, right? So it is only one ball. That means you will pick is. The ball is. Got it? Now apply rule. So in the rule, what did I tell you? That verb will be in the third form. What is the third form of kick? It is kick. First form. Second form is kicked, kicked. Third form is again kicked, kicked. So kicked, the ball is kicked. Now you have to mention the subject, but I told you that you have to put something before the subject. You have to put a preposition before the subject. Which is the most commonly used preposition? It is by. Okay, by plus what will you put? Subject. Which is the subject here? Subject is the man. So you close your eyes and put the man and then a full stop. The ball is kicked by the man. Aarti Kumari, hello. How are you, Aarti? The ball is kicked by the man. Alright, did you understand this thing? Got it? One more let us solve. One more let us solve. Example number 2 let us solve. The girl plucks flowers. Now remember, we are doing from active to passive. Okay, I am not writing those steps again. Okay, you can write those steps in your notebook, in your copies, and solve the exercises in this way. So first of all, what is the first step? I'll just go on telling you orally. What is the first step? The first step is SVO. You identify subject, verb, and object. So which is the subject here? Who is doing the action? Who is doing the action? The girl plucks flowers. So who is doing the action of plucking flowers? Obviously the girl. So the girl is the subject. On what is that action done? Action किस पे हो रहा है? मतलब लड़की का target क्या है? Flowers. So flowers is the object. Now what is the action done? What is the action being done? The action being done is plucking. तो plucks becomes your verb. ये action समझा रहा है हमें, तो ये verb हो गया. अब आपको आइडेंटिफाई करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करना है, to identify tense here. Again the same. You have PLUCK. You do not have ED. It is not in past. It is in present, and you have an S here. Okay. So it is in simple present again. So as we know that whenever we talk of simple present, we have to use either is or are or am. और जैसे कि मैंने बताया कि am हमेशा m के साथ कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ I जाएगा. There is no am here, so there is no question of I. तो इसको हम लोग पहले ही काट देते. Let us cancel it. Okay, Aarti, fine, that's great. In which class, Aarti? You're in which class? Okay, is used for
one and are can be used for many. Now what is the first thing that you have to do in passive voice? What is important in passive voice? Object is important. What will you bring here? You will bring object. What is the object? The object is flowers. flowers, flowers. Now we have already cancelled am. We do not need am because we do not have the word I here. We do not have the pronoun I here. इसलिए हम लोग am यहाँ पे इस्तेमाल क्यों करें अगर I है ही नहीं यहाँ पे, तो कोई जरूरत नहीं. तो आपका बचा क्या? आपका बचा सिर्फ is और are. अब is for one object and many is for many objects, है ना. is और are का जो रिलेशन है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ है. यहाँ पे is and are is only related to object. Is are am, all the three they are related to object. You have to put is or is are am according to the object that is mentioned. तो object यहाँ पे flowers है. Now flowers, we are talking about one flower or many flowers? क्योंकि s है, we are talking about many flowers. So if it is many flowers, then naturally you will take are, flowers are, right? Now verb, you have to put verb in which form? In the third form. So pluck, plucked, plucked. Again you have plucked. Flowers are plucked. Now what is left? You have to put subject. Now before the subject, what you have to put? You have to put a by. By the girl. Flowers are plucked by the girl. All right. Okay, Indrajit has tried. Very good. Okay, but here this is the answer, Indrajit. Okay. Did you understand? Okay. Now अब हम लोग जो है नंबर 3 करते हैं और नंबर 3 का हम लोग थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं. The boy broke the pen. ठीक है, the boy broke the pen. अब यहां पे what is the first step? Identify tense. SVO, I'm sorry, identify SVO. The first step is subject verb object को identify कीजिए. तो subject यहाँ पे कौन एक्शन कर रहा है? The boy broke the pen. तो पेन तोड़ने का एक्शन कौन कर रहा है? लड़का. तो लड़का एक्शन डूअर हुआ, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट. अब लड़का क्या ब्रेक कर रहा है? What is the boy breaking? What is his object? What is his target? तो टारगेट हुआ आपका पेन. तो you have to take the also, as I said, आर्टिकल आपको लेना होगा, नहीं तो आपका मिस्टेक हो जाएगा. ओके, प्रॉब्लम हो जाएगा आपका. ठीक है. ठीक है, तो आप यहां पे आर्टिकल आप ले लेंगे और ब्रोक आपका क्या होगा? ब्रोक यहां पे आपका होगा वर्ब, क्योंकि ब्रोक हमें एक्शन समझा रहा है कि लड़का क्या कर रहा है पेन के साथ. वो पेन को तोड़ रहा है. व्हाट इज द बॉय डूइंग विद द पेन? द बॉय, व्हाट काइंड ऑफ एक्शन इज द बॉय डूइंग विद द पेन? द बॉय इज ब्रेकिंग द पेन. वेदर द बॉय इज राइटिंग विद द पेन, वेदर द बॉय इज लिफ्टिंग द पेन, whether the boy is throwing the pen. क्या कर रहा है लड़का उस पेन के साथ? What is the boy doing with the pen? The boy is breaking the pen or the boy broke the pen. तो यहाँ पे एक्शन वर्ड हमें जो समझा रहा है, जो वर्ड हमें समझा रहा है एक्शन, वो है ब्रोक. तो हमें अपना वर्ब मिल गया. We got the verb. Right. अब आप क्या करेंगे? What is the next step? Next step is identify tense. तो आप tense identify करेंगे किससे? मैंने आपको बार बार कहा है, tense आप आइडेंटिफाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ वर्ब को देख के. लुक एट द वर्ब. फ्रॉम द वर्ब यू कैन आइडेंटिफाई द टेंस. राइट. तो ब्रोक आपका कौन सा टेंस है? ये कौन बोल सकता है कि ब्रोक कौन सा टेंस है? तो ब्रोक आपका, अगर मैं इसको लगाऊं ऐसा कि ब्रेक, ब्रोक,
और ब्रोकन, थोड़ा कॉर्नर में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रेक आपका फर्स्ट फॉर्म, ब्रोक आपका सेकेंड फॉर्म और ब्रोकन आपका थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म हम लोग प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, सेकेंड फॉर्म इज नोन एज पास्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल। आप याद रखिए, फॉर्म और टेंस में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर्म और टेंस में, फॉर्म और टेंस दोनों एक नहीं है, बोथ आर नॉट सेम, है ना। ब्रोक मतलब तोड़ा था, ब्रेक मतलब तोड़ा, मतलब अभी अभी हुआ ये चीज। ब्रोक मतलब तोड़ा था, इसका मतलब वो पास्ट में चला गया, राइट। तो ये पास्ट में है, ब्रोक जो है ये प्रेजेंट में नहीं है, ये पास्ट में है। तो अगर ये पास्ट में है तो आपको याद रखना है, जैसे प्रेजेंट में हम लोग इज आर एम यूज करते हैं, पास्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, या तो वाज यूज करेंगे या तो हम लोग वेयर यूज करेंगे, दोनों में से कोई एक। अब यहां पे वाज होता है फॉर वन ऑब्जेक्ट, वेयर होता है फॉर मेनी ऑब्जेक्ट्स। अब आपको देखना है ऑब्जेक्ट वन है या मेनी। तो क्योंकि हम लोग पैसिव वॉइस में सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या लाना होगा, यहाँ पे द पेन को लाना होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द पेन। हम लोगों ने लगा दिया द पेन। अब पेन एक है, वन है या मेनी है, इस पेन वन और मेनी। पेन, पेन्स तो नहीं है, इट इज नॉट PENS, इट इज PEN। इसका मतलब वी हैव वन पेन प्लस इन पास्ट टेंस। तो हम यहाँ पे वाज लगाएंगे आंखें बंद करके, जस्ट क्लोज योर आईज एंड पुट वाज। वेरी गुड इंद्रजीत, क्या बात। हम लोग यहाँ पे वाज लगाएंगे क्योंकि एक पेन है। अब वर्क का हमें थर्ड फॉर्म निकालना है, मैंने ऑलरेडी निकाल के दिया है यहाँ पे कि हम कौन सा यूज करेंगे वर्ब, हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे हम ब्रोकन लगाएंगे। तो लगा दीजिए ब्रोकन, द पेन वाज ब्रोकन। अब बचा क्या, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, यू हैव टू पुट सब्जेक्ट हियर। लेकिन सब्जेक्ट से पहले तो और एक चीज हमें लगाना है, वी हैव टू पुट समथिंग एल्स बिफोर द सब्जेक्ट। तो हम वो चीज क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। और उसके बाद बचा क्या, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे द बॉय है, तो लगा दीजिए द बॉय, है ना, लगा दीजिए द बॉय। अब हो गया हमारा एक्सरसाइज। देखिए कितना इजी है। द ओनली थिंग दैट विल ट्रबल यू लिटिल बिट, बट इफ यू प्रैक्टिस इट वोंट, आपको ट्रबल बिल्कुल नहीं देगा, वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, आई वुड लाइक टू एडवाइज यू दैट यू कैन गो टू गूगल, अब वहां से एक इमेज डाउनलोड कर लीजिए, वर्ब फॉर्म, ऐसा लिखिए कि आप वर्ब फॉर्म्स, और आप इमेज सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारा पिक्चर मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड करके आइडिया ले लीजिए। आई एम नॉट टेलिंग टू मेमोराइज, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वर्ब्स, हाउ मेनी विल यू मेमोराइज, आप आइडिया ले लीजिए वहां से, यू टेक आइडिया फ्रॉम देयर। अदरवाइज अगर आपने ब्रोकन की जगह ब्रोक लिख दिया या ब्रेक लिख दिया, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इट विल, योर होल आंसर विल बी रॉन्ग। बिकॉज यू सी, आई विल गिव एन एग्जांपल, it is just like mathematics, 2 plus 2 cannot be 5. If you write 5, your answer will be wrong. 2 plus 2 is always how much, 2 plus 2 is always 4. If you write 3 or 5 or 6, it will always be wrong. So grammar is just like mathematics only, one word if you do here and there, your whole exercise will become incorrect, आपका पूरा एक्सरसाइज इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मैं आज आपको इतना तक ही दिखा रहा हूं, आई एम जस्ट शोइंग यू टिल दिस मच ओनली, बिकॉज टू मेनी थिंग्स विल, यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट। आप अगर 3 दिन का खाना एक दिन में खा लेंगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा आपका, फिर आउटगोइंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। ओके, तो लेट मी नॉट गो इनटू मोर एक्सरसाइजेस। आप इतना, आप घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस का, ठीक।
ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा घर पे। एंड प्लीज यू कैन डू वन थिंग, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे देखिए ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे वहां पे। आप मेरे चैनल में जाएंगे, इफ यू विजिट माय चैनल जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में आप जाइए, यहाँ पे आपको सब मिलेगा। आई हैव कवर्ड ऑल द ग्रामर टॉपिक्स ऑफ क्लास 10, मैंने जितने भी ग्रामर टॉपिक्स है क्लास 10 के मैंने पूरे कवर अप मैंने किया है, तो आप वहां से देख लीजिए। ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन होती है ईमेल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, then you have there are some others, amplification writing, then you have advertisement, I said, article writing I have covered, letter writing is there, so you'll find all there. Okay, just go and visit. I've explained in detail. I always take care of students so that I don't miss out anything, so I've explained in detail. Please check this playlist there. Okay, so with this I would like to end the video. Okay, I like to end the live streaming. I hope all of you find it very beneficial, and those who have, if you have missed any part, you can again come back after I finish the live. आप लोग फिर से इसको देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वर्जन आप देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। यू कैन प्रोवाइड द लिंक्स टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड। एंड मैं एक चीज कर दूंगा, आई डू वन थिंग इज दैट इन द एंड स्क्रीन में मैं वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का वीडियोस डाल दूंगा, और ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का प्लेलिस्ट भी मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। और उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, along with that what I'll do is that I'll provide the links in the description box also. And yes, one more thing, those who are in classes 9 and 10, you can check out my website, the link is in the description box. आप जाइए description box में चेक कीजिए, वहां पे लिंक दिया हुआ है www.omnigyan.net। आप इस वेबसाइट में जाएंगे, आपको क्लासेस 9 और 10 के नोट्स यहाँ पे फुल मिल जाएंगे। प्लीज गो एंड विजिट द वेबसाइट, द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी अगर आप चेक करते हैं तो आपको अभी मिलेगा वहां पे। और बाकी ये जो प्लेलिस्ट वगैरह है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई विल पुट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जो 4 आपके एंड स्क्रीन्स आते हैं लास्ट में, द 4 एंड स्क्रीन्स दैट यू गेट एट द एंड, वहां पे भी मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और ये ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का प्लेलिस्ट में यहाँ पे डाल दूंगा। राइट, ओके, so that's all from me for today. Thank you so much for watching the video. Good night Indrajit, and good night to everybody who is watching the video right now. Okay, thank you so much, and good night to all. And once again, don't forget to subscribe to the channel and share my videos with other friends also. And I'm there on Instagram and Facebook also. The link has been given in the description box. Please go and follow me there also. And please, when you go to my website, please follow me there. There's a follow button also on the left side. Okay, you'll find it, so follow me there also on omnigyan.net, so that whenever I upload any notes, you'll get notification. That is the only thing. Okay, and always press the bell icon on my YouTube channel, so that whenever I upload any new videos, जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। And check my community tab also. In the community tab, I give many informations there on my videos. Okay, you can go and check it out there also. Thank you so much for watching the video once again. And finally, good night Aarti. Yes Aarti, good night सबको। ठीक है, so I'm ending the live streaming. Thank you so much once again, and all the best to all of you.